Hello friends, welcome back to CCSP certified channel. Today I am uploading recording of 31st May. It was 5th class, and as I mentioned before also, Domain 1 took 7 classes. This is 5th class that I am uploading recording. So previous class we started module 3 and we have seen the cryptography, that is most important topic for this exam. Approx 20 to 25 questions comes from the cryptography itself. So we have seen the PKI, TLS, and some question, and we'll continue today on the same line. But before this, I would like to discuss about the peace of mind activity that's going on. So we just start with this discussion first, and we will go to the recording. The promotional activity going from IC Square, name is peace of mind. You might be getting a different offer the time you are watching this recording, but the offer name will be same, peace of mind. So current offer going on for it is actually the second attempt, free second attempt, in case you are not able to qualify the first attempt. So current offer is saying that if you enroll by 15 March and give first attempt by 31st, you will get a second free attempt by 31st May. So similar offers IC Square gives in almost every alternate month. So this is March month offer going on. Next offer might be in end of April or May month. And if you want to get ready for these offers, better you enroll for any of these classes. So either you can write me at the ccsp-certified@gmail.com to enroll for my batches, or you can ask for these recordings. So I have uploaded all the recordings. I can grant access to you with some nominal fees, and I will along with this I will give the question bank and the slides and the guidance also. So so as I mentioned previously, जब भी data in rest होगा, कोई भी scenario data in rest का, either you store the data in long term storage, you do a backup, you store in object store, और जब भी ऐसा सिनेरियो है कि they will construct a scenario, उसके बाद they will ask कि which one to use, always think about the encryption if data in the rest in the picture, और बेस्ट encryption algorithm जो इंडस्ट्री अभी यूज करती है वो AES है. डेटा इन ट्रांजिट होगा जब भी डेटा रेप्लिकेट होगा एक जगह से दूसरी जगह, एक CSP से दूसरी जगह CSP, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज से दूसरे ऑब्जेक्ट स्टोरेज, डेटाबेस से ऑब्जेक्ट स्टोरेज, कहीं पे डेटा माइग्रेशन हो रहा है तो TLS पिक्चर में आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि डेटा यहाँ जा रहा है. दे विल कंस्ट्रक्ट सब सिनेरियो कि आपने 2 CSP सर्विसेज परचेज की है ताकि आप लोड बैलेंसिंग कर सके, डिजास्टर रिकवरी कर सकें. And when data you want to have a data sync between these two CSP, then again they are constructing question on the data in transit. And if data in transit, TLS का ऑप्शन सर्च करना चाहिए आउटपुट में से. So far so good. कोई query before we start next topic now? अभिषेक. टीएलएस में टीएलएस का वहाँ पे एक टीएलएस होता है, एक एसएसएल का ये होता है. हाँ तो जो प्रीवियस स्लाइड में दिखा है, हाँ तो वो SSL कौन से TLS. टिकट में एसएसएल में डेटा के अंदर तो नहीं आएगा वो. नहीं SSL TLS का ही वो है, ओल्डर फॉर्म है. पहले TLS प्रोटोकॉल को SSL हाँ, वही प्रोटोकॉल. 1.0 को बाद में टीएलएस 1.1 वही जो हाँ हाँ रिप्लेस वही किया है. हाँ वही रिप्लेस कर दिया गया. तो SSL और TLS कभी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो SSL देंगे और TLS देंगे, क्योंकि वो एक अच्छा, एक 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 ही साथ ऑप्शन. नहीं देंगे. हाँ हाँ, एक साथ सही कभी नहीं दे सही. सकते ना, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन है एक्चुअली. वो नया नाम है उसका TLS अब, ठीक है. अब की मैनेजमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरे टॉपिक्स IAM भी स्टार्ट करेंगे टुडे. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन IAM के से ही आते हैं. पर पूरा अभी इस डोमेन 1 में कवर नहीं होगा, कुछ डोमेन 3 डोमेन 4 में भी कवर होगा. तो की मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लाउड, बिकॉज हमने अभी देखा कि पूरा क्रिप्टोग्राफी की पे डिपेंड करता है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की. सो होल सिस्टम लाइज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कीज. तो जब PKI इश्यू करता है, इफ यू हैव सीन प्रीवियसली द डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट करते थोड़ा सा. PKI ने जब की इश्यू करी प्राइवेट की, so when the certificate authority issue a private key and the certificate, what we have done,
the machine has stored the private key and use the certificate to share to the public key or certificate to share to the recipients. So private key was with the sender and most secure way, क्योंकि वो ऑन प्रीमाइस सिस्टम था, वहाँ पे की बहुत सिक्योर थी और वो की को यूज कर पाया विदाउट एनी सिक्योरिटी कंसर्न. बट नाउ they realize कि ये sender cloud है, because you have moved your infra in the cloud. Now you need to share the key to the cloud to perform operation by the cloud on behalf of you. So cloud अब तुम्हारे behalf पे encryption decryption करेगा. So you need to share the keys to the cloud. So cloud needs key to perform encryption decryption on behalf of the customer. Actually, the algorithms are running on the cloud and those need a keys. So where to be place a key? So in cloud it is very important the private key management, क्योंकि public तो already public है. There is no concern on the public key. Only concern we have on the how to manage the private key in the cloud. And at least couple of questions CCSP ask on this slide itself. So they ask different scenarios where to manage the cloud the key, and we'll cover this again in the domain 4 in the more detail. But quick overview: key along with the data. So when you storing the data, let's say we have seen that data is stored in the object storage should be encrypted. Okay, so when program want to read the data from object storage, or when they want to store the data before the in object storage, it should be encrypted. So where is the key? So either if we key is along with the data, like in the same cloud on same cloud provider, in some other folder or some other location, if the key and data are in the same hierarchy, it is fastest way of performing any operation. Like it is very quick that we don't need to retrieve the key from anywhere. Key is available there. Just use the key, encrypt the data, and store in the object storage or store in the database. It is fastest but least secure way. Second way is key in cloud but separate from the data. And here it, key is still in the cloud, but it's not with the data. It might be somewhere in isolated area in the cloud itself. So there is a separate area in the cloud that is known as a vault, and the actual term is HSM that we'll cover in the next slide. So hardware security model. So each cloud provide a vault service which is only used to store the keys, and that vault is actually a HSM, hardware security model, that has own IAM system, own encryption decryption systems, and more secure way to storing a key. So they only store the key, nothing up, no other data apart from this, and they store the keys. So keys are still with the cloud, but it is not with the data. It is in the HSM, which is a separate service the cloud CSP sells, and the first key get retrieved from the that HSM comes to the data, and the data encryption happens, then key goes back to the HSM. So this is the fast, but again it is not very secure. Still the key is with the cloud provider, cloud administrator. So someone who can manage the vault, who has a super admin access in the cloud, at least can manage the keys, can use the keys, can see the key. The last concept which is best to use in this cryptography, key at the customer end, either customer on-premise system or HSM systems. So customer manage the key, customer don't share the key to CSP, and that's based on the security, but very slow. And how it perform? So customer performs some of the operations, at least like, so when before sending data to object storage, data from CSPs goes to the customer's environment first. It get encrypted there, then encrypted data flow back to the customer environment. And when data goes from the CSP to customer, it go via TLS. So data go in the secure route to the customer first. Customer encrypt it because customer has a key, and then customer send the data back to the CSP. The encrypted data comes to the CSP end. So it is relatively slower in all three approach, but if they ask that what is best way to secure the data, the always best way is key at the customer end. So always select that option from the fourth option, but they ask they want to retrieve the data quickly,
then the always go with the key along with the data. And in the some of the cases you will see this, even though it is faster but it should be relatively secure, we should go with the second option. And and key management is extremely important if data is being stored in the archive mode. Archive mode is data in rest, and data in rest, it means that AES is in place. If and because archive mode data get stored in the 7 year, 10 year, 12 year. So if the after 12 year you don't know where your keys are, and you will actually lose the data, because if you don't have the key, you will not able to decrypt it again. So there are some agencies, they are external agency who manage the keys, and they are known as a key escrow. So वो हम पढ़ेंगे आगे। वो this the same concept like तुम अपने नेबर के पास अपनी की रख देते हो, इमरजेंसी कीज। This is same concept like key management. So they manage the keys on behalf of you, and they charge for this. And this very important because key management, कहाँ की रखें और कौन की लॉन्ग टर्म के लिए डेटा जा रहा है, तो की स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि डेटा रेप्लिकेटेड BCDR सेटअप when there is a multi cloud there, or when there is a different availability zone or replication happening between one setup to other setup. So data in let's say production data is getting replicated to the non-production setup or the active passive setup. The passive side data is in rest until it is used. So it is encrypted. So there is data is stored as an encrypted form. And when disaster happen, when you want to switch back, you first has to use the keys to decrypt it first in the DR setup. So की वहां भेजना पड़ेगा because key is currently is at the HSM end on the BC end. की का replication नहीं हो रहा है. So key has to migrate from BC to DR. That's why the key management is very important. की कहीं ऐसी जगह हो कि जो disaster के होने पे भी key impacted नहीं हो. Otherwise, if key on the business continuity setup, BC setup पे key रखी है, if the whole BC setup goes down or get attacked by hijacker, you will not able to retrieve the key from BC setups for the DR. So key must be outside somewhere. Same concept like if you have multiple keys for your house, यदि की तुमने हाउस के अंदर ही रख दी है, एक्स्ट्रा की, एंड इफ यू लॉस द मेन की, एक्स्ट्रा की का कोई यूज नहीं है, because that is also still in the house. You cannot use that in the emergency or in the disaster. Key must be with the neighbor or outside in your car or some with some relative or at least बैंक locker. यदि वो बैंक locker में रखते हो आप की को, तब वो की escrow concept हो गया। की को कोई और मैनेज कर रहा है, एक्सटर्नल एंटिटी मैनेज कर रही है। बट तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन, एटलीस्ट दो क्वेश्चन की मैनेजमेंट पे आते हैं, और डायरेक्टली नहीं आते। दे कंस्ट्रक्ट ए क्वेश्चन बाय कंस्ट्रक्टिंग ए सिनेरियो ऑफ द मल्टी क्लाउड or construct a scenario of BCDR, and they give that they want to achieve either fastest or secure, and you have to select the option. Okay, हम इसको फिर पढ़ेंगे। की मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल 4 में पूरा एक टॉपिक है, but just for the continuity I have added here. HSM, we quickly discuss this hardware security model that we have seen. Different organizations sell this service as a vault service. It is physical. First, it is a physical computing device. So it is not a software. It is a physical computing device that safeguard and manages digital keys, perform encryption and decryption function, harden, tamper resistant and hardware device. So ये एक वो पिक्चर देखी होगी दा विंसी कोड, उसमें एक सीक्रेट मैनेजमेंट के लिए एक वो था, एक डिवाइस था जो पासवर्ड रखता था, एंड इफ यू फोर्स दैट द पासवर्ड को गला देता है। यू कैन नॉट रीड द पासवर्ड, यू कैन नॉट ब्रेक दैट डिवाइस एंड ब्रिंग द पासवर्ड आउट, यू हैव टू अप्लाई द पासवर्ड टू नो द सीक्रेट बिहाइंड देम। हार्डवेयर HSM एग्जैक्टली सेम काम करता है, इट इज टेम्पर रेजिस्टेंस। यदि एक तो ये ब्रेक नहीं होता, यदि इसको ब्रेक कर दिए जाते हैं तो उसके अंदर के जितने भी सीक्रेट होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे HSM को। तो ये डिवाइस हर CSP प्रोवाइड करता है एज ए वॉल्ट सर्विस करके, and that device maintain the keys. And cloud-based HSM is a cloud-hosted hardware security model service that allows to host encrypt keys and perform cryptographic operations, and that is FIPS 142 level 3 certified. ये क्वेश्चंस भी आता है, और विल रीड सर्टिफिकेट जो
फिफ्थ यूएस गवर्नमेंट्स के जो लॉस है वो पढ़ेंगे। फिफ्थ 142 लेवल 3 याद रखो। दैट्स द यूएस एजेंसीज फॉर एनी क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल्स। सो कोई भी एनी कंपनी हु इज डेवलपिंग एनी क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल, they must be FIPS 142 compliant. There are 4 levels. So HSM is level 3, and it can be shared, it can be isolated. If shared, it is same like public cloud concept. HSM in public cloud concept is known as HSM shared. Then same HSM store the secrets of multiple customer. If it isolated, only one customer, same private cloud use HSM. So it is much costlier than the shared one. So far so good. कोई doubt है? No, Ravi. No, good. हाँ ओके ओके, विल आस्क क्यूरीज, हम क्वेश्चंस कवर करेंगे लेटर। क्विकली हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज। वेंडर लॉक-इन हमने पढ़ाई है। सो वेंडर लॉक-इन इज अ सिचुएशन वेयर कस्टमर इज अनेबल टू मे नॉट एबल टू लीव और माइग्रेट ट्रांसफर्स टू अल्टरनेट प्रोवाइडर्स। तो यहाँ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो जहाँ पे भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा लॉक्ड है, वहाँ पे इंक्रिप्शन एक प्ले करेगा। और वेंडर लॉकिंग पोज ए रियल रिस्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। एंड there are scenarios जब जहाँ पे unfavorable contract हो, proprietary data format हो, insufficient bandwidth हो, ये एक रीजन होते हैं वेंडर लॉकिंग के। तो वेंडर लॉकिंग के लिए क्रिप्टोग्राफी हेल्प्स ए लॉट इन द वेंडर लॉकिंग। कैसे करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देते हैं कि डेटा मीडिया सैनिटाइजेशन। सो इफ यू वांट टू लीव और माइग्रेट फ्रॉम वन क्लाउड प्रोवाइडर टू अनदर, this may be possible, but challenge is is a removing and exporting their large amount of structured data from one provider to other provider। ये बड़ा चैलेंज है जब हम डेटा किसी क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर जाते हैं। एक क्रिप्टोग्राफिक इरेजर एक कंसेप्ट है जो डेटा डिस्ट्रॉय करने का सबसे अच्छा तरीका है क्लाउड में। तो एज वी हैव सीन, क्लाउड में वी डोंट हैव मच कंट्रोल बिकॉज all the encryption engine is with cloud, data is with cloud. We only have to trust vendors that they have deleted our secure data, critical data। एक one process है cryptographic eraser, is a process of deliberating destroying the encryption keys। यदि keys delete हो जाएगी, तो there is no way to decrypt the data because whole cryptography lies on the keys only। To decrypt the data, I should have a key, whether it is a public, whether it is a symmetric key algorithm or asymmetric key algorithms। Without key we cannot decrypt the data। So deliberately destroying the keys is a cryptographic eraser। यहाँ से भी दो क्वेश्चन आते हैं cryptographic eraser से। They ask, is a cryptographic eraser is a deletion of the data? It is not, it is not a deletion of the data, it's a deletion of the key first। Very important, we are not deleting the data, data is still the CSP, but they are not able to decrypt it because the keys are deleted। और कीज कभी तब डिलीट हो सकती है जब कीज कस्टमर के पास है, कीज एक्सटर्नल सिस्टम में। इफ कीज आर विद द सीएसपी, कीज कैन नॉट बी डिलीटेड आल्सो, कीज भी उनके पास हमेशा परमानेंट हो जाएगी। तब उसके लिए भी एक तरीका है। Even you so we'll cover this first, deliberating destroying the encryption key that were used to encrypt the data digitally। The data is encrypted with the key, so data is rendered unreadable at least until the encryption protocol used to be broken or brute force attack हो जाए तब तक। Key destruction is on is not a compressive approach as the key may be recovered using the forensic techniques। as I mentioned, keys यदि CSP के पास है तो keys भी recover हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो क्रिप्टोग्राफी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्रिप्टोग्राफी के रीजन नीड ए वन इंक्रिप्शन इंजन। हमेशा एक इंक्रिप्शन इंजन होना चाहिए जो कि सिक्योर होना चाहिए, जो ब्रूट फोर्स अटैक या फिर वर्नेबल प्रोटोकॉल्स नॉन नहीं होना चाहिए। ऐसी एल्गोरिथम होनी चाहिए क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम जो कि एटलीस्ट इंडस्ट्री में अभी तक ब्रोक नहीं हो चुकी है, उसके थ्रू इंक्रिप्शन होना चाहिए। डेटा एक क्लासिफिकेशन एक प्रायर रिक्वायरमेंट है। सो नॉट एवरी डेटा इज इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर। Data should be data classification that will cover in the module in the domain 2। So data should classification should be done, and only the critical data we should perform the cryptographic eraser। And the key, even the key, if the key is still with the CSP, there must be a master key and engine outside, and then the CSP key must be encrypted with the master key that is with the CSP with the customer। तो यदि की आप CSP के पास रखते हैं सभी अपने ऑपरेशन के लिए, उस की को भी आप इनक्रिप्ट करके रखिए कस्टमर मैनेज की के थ्रू। और वो सिर्फ
जब 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 यूज होगी, जब आपको की मैनेज की रोटेट करना है, so CSP will not able to use the key in their wish. So even though if the key is still with the CSP, you can still manage this via the encryption and the key managed by the customer. So crypto eraser is the destroying of the key, first concept. Second is need a strong encryption engine. Third concept, it need a data qualification. Fourth concept, even though key is with the CSP, it is not secure because it can be recovered using the forensic techniques. We will read the forensic techniques in the domain 6. And the best way is key always with the customer. That's the best way to secure your data. Okay, ये कंसेप्ट वापस हम पढ़ेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, की मैनेजमेंट एंड क्रिप्टोग्राफिक इरेजर. सो एज आई मेंशन, क्रिप्टोग्राफी से करीब 20-25 क्वेश्चंस आते हैं. TLS itself comes 5 to 6 questions. Key management comes 2 questions. This I'm saying that I have seen in my paper. Can be more questions from this. Crypto eraser itself, two questions from this one slide itself they ask. We'll start the IAM portion now because that's part of domain 1, and यहाँ से कम 10 questions IAM से आएंगे. So Abhishek and we are from the IAM background, we understand this more better way. But Arpit, you and Karthik, you ask me any query if you face any challenge during this discussion, but understand them properly. So IAM has they have module that's provisioning, deprovisioning, centralized directory services, privilege account management, and authentication and authorization. These are whole consists of the IAM services. So we come with the IAAA. So IAAA, you will read this IAAA again and again, even though you prepare for any of the exams, CISP, CCSP, because IAAA is core features of the IAM. So IAAA stand for identification, A stands for authentication, A stands for authorization, and last A stands for accountability. So identification is your identification, like user ID, username, Aadhaar number. Those are your identification that identify you, but they don't authenticate you, because someone can carry your your Aadhaar card. Someone can carry your login badge. Someone can store your username. Someone will read your email address. But until unless they know the password, they know the PIN, they know the if the retina scan is there, until unless they identify you, it is not a authentication. So the authentication is something that can identify you. Authorization is something you who you are, and the authentication will confirm you who you are. Authorization will confirm you whether you have a right permissions to access those resources or not, whether you are authorized to go inside that. So when we go inside a bank, and when we have a locker room, we are not authorized to go to that room until and unless we are the authorized persons to go in that one. In the office, we are not allowed to go to server rooms. So authentication is you are a employee, you can enter inside the office building, but you cannot go to inside the HR rooms or the inside the server rooms until unless you are authorized. And accountability is maintaining all your operation, authentication, authorization of operation, and maintaining the logs, so so we can trace the subject, and the someone who is perform the operations should be accountable. So logs give the accountability. So we will quickly discuss first few concepts, and we'll discuss IEEE again. So zero trust. So first concept is very important in cloud, because in on-premise systems or in the native system, traditional IT network security trust everyone and anyone inside the networks. So they don't think anyone inside their organization can be malicious, and that's why if you inside a particular if you are accessing application in intranet, or if you are a trusted employees, no one will ask you before granting any access to the resources. So zero trust architects trust no one, whether it is inside or outside. So zero trust, which is a important concept, especially in the cloud, because cloud, even though you are a administrators, you are a admin,
You can be malicious and you can perform some of the operations that is not supposed to be done by you. So zero trust architecture say that when there is a protection there, always have a denial by default. So no one can access the resources until and unless they are authorized to do this one. There is no access granted by default to the any of the user. This is the zero trust. Never trust anyone. This is how the zero trust defined in the cloud or in the new IT security modules these days. Now we come to identification. So we have seen that we don't trust anyone. Everyone who has to come there must be a proper, whether it is a CEO, whether it is a normal employees, whether it is a trusted user, someone has to do a identification and authentication every time, and we have to check their authorization when they perform any operations. So identification, that is first part of IEEE, consists of the three sub categories. One is provisioning, second is deprovisioning, and third is user lifecycle management. So when identification of the users only possible when there is a proper user accounts get created in the systems, and when he moves, his roles and responsibility get changed, and when he leaves, his account get deactivated, because identification is the provisioning in the system. So when you are part of a, let's say you want access of any applications, your account get created, your digital identity get created in that systems. That's called as a provisioning part, username or email creation there, and that is being used to identify you when you log in later in the systems. So provisioning is very important part of the identification of the user, because it gives a it register you in that organization, and you get a account, whether it is username, email address, to log in further in that one when you use the password. And deprovisioning, that when you leave the organization or when your role get changed, and your access are not required, your account must be removed from that particular applications. And user lifecycle management, like when you joins and you move to some other role and you leave the organization, all the management of your identity is based on the identification part, because your identity remain there, you can identify to that application even though you are not part of the organization or you don't need those access of those organizations. So organization must grant an employee what they need based on who they are and what they do with the organizations. So what role they have, based on this, your IT should be provisioned in those resources, and only birthright access should be granted by default. Birthright access means when you born, you got a birthright access, like you got a Indian citizenship, you got a fundamental rights access. So those are the birthrights. So those are with everyone. So when you join the organization, you got only, let's say, mail access you got, and you got ID card. Those are the birthright. If you need any additional access, you raise a request and you grant it. No, by default access should be granted, because this create a issue, and they give you additional access to you over the time, which is not required by you. And there's a compliance that we'll see in the questions later. And there must be a centralized IAM system, whether it can be internal to CSP or can be external system. And there's a FIM, Federated Identity Management, that we'll cover later, but can be CSP, the cloud service provider. Either they provide a IAM system, Identity Access Management System, or if the external entity providing this one, it can be federated with the Federated Identity Management. So, so centralized identity management means all IAM operation happens via one environment. So goodbye to TDS granting, revoking on user permission on case by case basis. So who will get what access can be automated with the centralized IAM system. You might have seen some in your organization, Oracle Identity Manager or different identity tool used to centralize identity management. There is a one concept there, identity as a service. If 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 uh, if CSP only provide IAM services to the customer to manage the identity, is known as identity as a service. So we have seen there's IaaS, PaaS and SaaS, platform as a service, software as a service, and infrastructure service. There's additional concept, there's a identity as a service, which is being used to have a centralized IAM system. So let's say I'm using Oracle CSP, but I'm using Google IAM systems just for the managing my identity management system, just managing my identity services.
then Google is providing this identity as a service. They are not providing any ask, pass, and SaaS, but still your user management is with Google, then it is become an identity as a service for you. Is it clear? Any queries so far? Yes. Okay, this is good. Now we come as centralized directory services. So when there is a user management there, we do have a we have to store somewhere the passwords and the credentials of the user, which can be used to authenticate. Active Directory can have their own way of storing it, and database can have their own ways of storing it. But the backbone of all these directory services is LDAP, lightweight directory access protocols. So this protocol is built upon the X500 standard. We have seen X509. What is X509? What was X509? Where we have read X509? Digital signature Digital certificate. certificates, yeah, Certificate. Yeah. certificates. X509 So certificate. X500 याद रखना, वो LDAP का प्रोटोकॉल है, और जितने भी ये लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल हमेशा रीड मैनी राइट फ्यू ऑपरेशंस के लिए होता है, वेरी फास्ट रीडिंग होती है, और जितने भी ऑथेंटिकेशन सोर्सेज होते हैं, mainly companies use LDAPs for the authentication purpose, because there is a very good for the reading multiple times and writing few times. It's very fast compared to other database and others modules. So for centralized directory services, the best way is used to LDAP and have a centralized LDAP to manage your all the identities. So one place to manage the identities is better way rather than a different entity manage the identities. Okay, so this is the consideration when you perform the IAM operations. CCSP asks these questions. Better ways manage LDAP as a centralized systems all of your identities. If there are multiple places your identities are placed. Okay. Just privilege account management. So all the admin accounts or all the accounts with has a capabilities to operate, perform, create, update, delete, all type of operation, those known as a privilege account management, they carry the highest risk, and then impact of the compromise their account is very high, because they are the one who can make an impact. Same like the example is that Rahul Gandhi. Let's say Rahul Gandhi is a privileged account management person. So he can make a high impact on even though he is not a he is not a Congress president, but he still has an impact in his voice, in his words, his actions has an impact in the organizations or in the party. Same way, the accounts who are the highest privilege account, they have the privileges to perform operations which can make a difference. And those accounts we perform the multi-factor authentication that will see it. So for privileged account management accounts, there must be MFA enabled that will cover quickly. So we'll cover authentication and then we'll cover MFA. So authentication, so we have seen identification. Identification just to identify you, either your username or something you have. So ID card, Aadhaar number, passport, those are mainly the so just to the initial phase of the token that can be carried by anyone else. Even Aadhaar card is something you have a picture, so it will not be a identification. But identification is something that can be identified. This is the Ravi Agrawal, but authentication will confirm you that you are the one. So there are three keywords, important keywords: something you have, something you know, and something you are. So for authentication, either you, when you go to ATM machine, you have a ATM card, that is something you have, or you have a mobile application, you have a passport, because those are something you have category. Something you know, like when you go to ATM machine, you insert the ATM, they ask for PIN or password. That's something you are, something you know, because there's something or the Khulja Sim Sim, the keyword that is being used by Alibaba, there's something you know. The only thing the authentication can help, the something you know can help you in the authentication part. Something you are, biometric verification like retina or voice, something you are. And this any of this can be used for the authentication purpose. And when there is multiple, there are more, two or more of this is being used, this known as MFA. So MFA, and there is one more concept, adaptive MFA, we'll cover here. MFA is combination of two or more independent credentials. So understand this. If you have a PIN and password,
it is not MFA. If someone asks insert pin, then they will ask to insert the password also. That's not something you know. There must be a combination of this, like pin and biometric verification, then something you know. Or ATM and pin is a MFA. So MFA is a combination of any of these two categories rather than one category. So this one question they ask to identify MFA, whether it is a MFA situation or not. And one question they ask we'll cover few questions later on the basic concept of the authentication authorization. So understand this, MFA is combination of two or more independent credential, is known as a multi-factor authentication. There is one more concept, adaptive authentication. This also known as a risk-based authentication. So MFA यदि ऑप्शनल हो और MFA तभी परफॉर्म किया जाए जब यूजर्स का अकाउंट रिस्क पे हो. So example is when you logging to bank website non-working hours में, or from a location which is not where you have not logged in previously, or from cyber cafe, or from the device which you haven't performed the login before, or any Gmail account you login, they ask to perform a second factor. They send a OTP to verify your second factors, or the different way to perform the MFA factors. But there's a risk-based MFA. So when in this case, MFA is not mandatory. Like if we make a second factor is mandatory, every time you have to give the OTP after the password you submit, it become a MFA option concept. But if it is adaptive MFA, MFA will only be available or visible to you when there is a risk, and when there is a user profiling they do, and if it is a risk in your user profile because you might be logging from very far from your existing location where you logged in daily, or from the IP address, or from the device which you haven't used any time before, then adaptive MFA comes in the picture. Okay. Single sign-on. So there must be a centralized person who can manage the credential and who can perform the authentication. So all the website no need to store the password of your user, only interact with that single systems, provide their username, password, and perform any MFA. All this done by a single SSO systems. All the website get it to key or token, and they trust this centralized systems, and they allow or grant users access of those applications. So this is single sign-on to this. So there's a federated identity management that we have seen. So when the single sign-on happens within an organizations, within a particular organizations, or within a CSPs do this, it is known as a single sign-on. But when there is a federation, when there is a two systems, and why it is very important, because when you use the CSP, when you move to cloud, there are two options. Either you move all your users in the cloud, and you perform the authentication authorization in the cloud, or you maintain your IAM systems. So if you are already purchased, let's say Okta, SailPoint, OIM, you already set up your user there. It is your on-premise systems, but your applications, database, others are moved to cloud. You want that user should authenticate to your native system, and then if they are granted access, they can access the cloud-based applications, Fusion applications, ServiceNow applications, database, only because post the authentication done in the on-premise systems. Then the federation comes in the picture. So federated identity management. So it allows to access across organizations. Like one organization is on-premise, second is CSP, or one company is Google, other company is Oracle. So even the cross-domain single sign-on is possible with the federated identity management. So we'll cover them later. Just quick, only I have given you because in this there are only keywords we need to know. We'll have a domain 4 is dedicated to IAM only, and they are so federated identity management will cover here. We have a SAML, OAuth, OIDC, and WS Federation. These are industry well-known protocols for the federated identity management. And just understand, CCSP ask some keyword like they confuse with the keywords also. So first thing that always understand, there is a keyword as per the standard guideline is there is an identity provider and service provider. There is no keyword apart from this identity provider and service provider in federated identity management.
And second is there is no federation keyword. Actual keyword is federated identity management. Sometimes you see the federation in the option and the theme in the option. Always go with the theme. Theme is the actual keyword for the federation that we call. So कई बार हम सुनते हैं फेडरेशन है या फेडरेशन नहीं है, ये फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट है। और क्वेश्चंस वाले हम देखेंगे वहां पे फिम भी आएगा और फेडरेशन भी आएगा, तो फिम पे जाना है हमेशा यदि हमको क्रॉस डोमेन सिंगल साइन ऑन पूछा जाए। सो अर्पित, कार्तिक, कोई डाउट है इसमें अभी तक? सो नहीं रवि। सिंगल साइन ऑन देख लिया, और यदि क्रॉस डोमेन सिंगल साइन ऑन होगा तो वो फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट कहलाएगा। इसमें ये यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर होगा, और जब यूजर यदि मान लो सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज एसपी इनिशिएटेड, कुछ आईडीपी इनिशिएटेड भी हो सकता है, एसपी इनिशिएटेड भी हो सकता है। यूजर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास भेजेगा, ऑथेंटिकेशन होने के बाद वो एक्सेस होगा, और सर्विस प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा, ऑथेंटिकेशन हमेशा आइडेंटिटी प्रोवाइडर करेगा। कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, सेमल, ओथ, ओआईडीसी, डब्ल्यूएस फेडरेशन, जो हम अभी कवर करेंगे। और फेडरेशन के टाइप भी होते हैं, एक होता है क्रॉस सर्टिफिकेशन, एक प्रॉक्सी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। So Ravi, Google login is the example of FIM. So Google is so when you log in to your company via Google account, we'll cover that. This how वो OIDC के enable होते हैं, पर हाँ वो फीम है, वो कौन सा Okay. फीम है हम देखते हैं अभी। पर ये देखना इसमें identity provider is a federated partner that voucher for the identity of voucher. The identity provider authenticate a user and provide a authentication token to the relying party, जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं, उसको रिलाइंग पार्टी भी कहते हैं। आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऑथेंटिकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ कंफ्यूज मत होना। हु परफॉर्म द ऑथेंटिकेशन इज आइडेंटिटी प्रोवाइडर and it generated token. Relying party is a federated partner that provide a service to the end user. Relying party do not authenticate user but instead request authentication decision from identity provider. Relying party may perform authorization. Relying party authorization कर सकती है, इवन आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऑथराइजेशन भी कर सकता है, पर रिलाइंग पार्टी कभी भी ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे आता है और हम विल सी दिस। ठीक है, हम सेमल, ओथ और आईडीसी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो फेडरेशन के लिए ही यूज होते हैं, तो फेडरेशन के लिए है, फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए सेमल, ओथ, ओआईडीसी और डब्ल्यूएस फेडरेशन इंडस्ट्री वेल नोन प्रोटोकॉल से विल रीड सेमल। सेमल स्टैंड फॉर सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक्सएमएल स्टैंडर्ड बेस्ड है, and it allows users partner to use single sign-on to access and web application services। and ये बहुत इंडस्ट्री नॉन ओल्ड प्रोटोकॉल है जो सेमल बेस्ड प्रोटोकॉल पे है, पर ये मोबाइल और आई2 डिवाइस के लिए केपेबल नहीं है सिंगल साइन ऑन करने के लिए। इसके लिए ओथ और ओआईडीसी का बर्थ हुआ। तो क्यों नहीं है, एक्चुअली ये पोस्ट करता है सेमल पे और रिडायरेक्ट करता है वेबसाइट पे। सो व्हेन देयर इज अ सेमल, आइडेंटिटी प्रोवाइडर ने ऑथेंटिकेशन किया, सो पोस्ट ऑथेंटिकेशन आइदर इट पोस्ट द सेमर रिस्पॉन्स टू द सर्विस प्रोवाइडर और रीडायरेक्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर। पर मोबाइल एप्लीकेशन में ना तो कोई पोस्ट का ऑप्शन होता है ना रिडायरेक्ट होता है। मोबाइल एप्लीकेशन में नेविगेशन हो सकता है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में, तो वहाँ सेमल फेल हो गया था। तो इसीलिए जो जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन है, आईटी एप्लीकेशन, वहाँ ओथ ओआईडीसी होता है जो मांगे करते हैं। पर सेमल में जो कीवर्ड होते हैं वहाँ आइडेंटिटी प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर होता है। If the SAML comes in the picture, don't select the relying party. It will be, दो terminology identity provider relying party दोनों हैं, but SAML only use the keyword identity provider and service provider। ठीक है। OAuth, Ravi, थोड़ा clear नहीं हुआ. How does SAML work? so SAML में एक identity provider एक service provider है ना, वो सर्किल ऑफ ट्रस्ट में होते हैं। the identity provider do the authentication and is post a token। हमने टोकन देखा ना कि ये टोकन पोस्ट होगा। द टोकन इज SAML रिस्पॉन्स, जो कि XML बेस्ड होता है। करेक्ट, मैकेनिज्म वही रहेगी। एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर होगा, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऑथेंटिकेट करेगा और एक टोकन भेजेगा जिसको हम बोलते हैं SAML रिस्पॉन्स, जो XML फॉर्म में होता है और वो पोस्ट करता है। वो HTTP रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट, या वो रिडायरेक्ट होती है HTTP SAML। दो तरीके से SAML रिस्पॉन्स भेजता है, क्योंकि सेंडर रिसीवर को कैसे भेजेगा, या तो वो HTML पोस्ट कर देगा या उस पर रिडायरेक्ट कर देगा, और रिडायरेक्ट करने पे वो जो टोकन होगा वो क्यूरी में चला जाएगा, हेडर में चला जाएगा। इन दोनों केस में टोकन चला जाता है
पर जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, IoT होती है, वो इन दोनों केस में वहाँ पे ना तो पोस्ट का ऑप्शन होता है, ना ही वो रिडायरेक्ट होता है, इसीलिए वो OAuth OIDC हम पढ़ेंगे। ठीक है। OAuth जो है वो 2006 में आया था, और OAuth 2.2 अभी इंडस्ट्री एक्सेप्टेड। OAuth 2.1 बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत थी, तो OAuth 2.0 is much simpler than the OAuth 101, and that is currently known as authorization protocol. So very important, it is not a authentication protocol. So we have seen that यहाँ पे authentication and authorization चल रहा है। OAuth is a authorization protocol. And what about the authentication? OAuth don't speak anything about the authentication. So it was developed for authorization, and it was developed by whom? So initially it was developed by Google and Microsoft for their mobile applications or their applications, social login applications. कैसे चलता है ये? It provides the temporary resource access to the third party application on legitimate user behalf. यदि एग्जांपल है कि कोई फोटो प्रिंटिंग एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको उस पर आप जाते हो, आपको अपना फोटो प्रिंट करना है। सो वन वे इज आइदर यू इंपोर्ट ऑल योर फोटोज देयर which you want to print in this application, and that can print on behalf of you, or you have a photos in Facebook, you can select from Facebook. So either you grant applications to access photos from the Facebook, those you want to print. So Facebook will only allow this application, OAuth application, temporary access to your resources if you grant them. So it is you granting these applications to access your Facebook resources. So you are the owner of your photos in the Facebook, and Facebook is OAuth provider, mobile application and OAuth consumer, and you are the subject who is granting, and OAuth protocol is being used for the granting temporary access. So Facebook will generate it, will give a token to this application that will be valid for, let's say, 10 minutes, 15 minutes. In that duration, they can use the token and access your photos, and post that your token will get expired, and this application will not able to access your resources. This is how the OAuth being used on being developed by the industries. Now, as I mentioned that OAuth was authorization protocol, it was not telling about how the authentication will happen, how the legitimate user will. So it is done on the behalf of the legitimate user. So OIDC solved the problem. It builds about the OAuth 2.0. So it is a OIDC Connect, we known as OpenID Connect, that is built on the OAuth 2. This is authentication framework. So both OAuth and OIDC use the JSON. So SAML use XML, OAuth OID use JSON based, and it do the authentication. And so in authentication plus OAuth 2.0 become the OpenID Connect. In Facebook, Google, Microsoft, all these applications are using nowadays OpenID Connect, that is above the OAuth 2.0. So previously it was OAuth 2.0 developed. Over the time it is got improved. Now it is known as the OpenID Connect, that is being used by all the companies. So now comes to this, जो आप बोल रहे थे कि social logging कैसे होता है. This is a federation case only. So when you want to log into a website, you have two options. Either you create an account in the website and then you authentication, or you use the social login, Facebook, Google. So all these application are using OpenID Connect to perform authentication for this application. So rather than you create a account, so जब हम यहाँ directly credential store करें, if you create an account and credential here, it is single sign-on, because you are just giving the password to the pin interest directly, and pin interest doing the authentication for you. But it is a federation case when you are using the continue with Facebook or continue with Google, because your credential are with the Google and Facebook, and that is a identity as a service, because they are managing the identities. Though you are using the services of pin interest, you are not using the services of Facebook, you are not using services of Google, you are using the services of pin interest. But rather than using the IAM system of pin interest, you are using IAM system of Facebook or Google. So this known as a social login. So OpenID use case has a so here
the same example, the photo sharing application. So photo sharing application will access of your photos on behalf of you. But how you log into photo sharing application? So photo sharing application. So here you see it is known as a relying party and identity provider in the OpenID and OAuth protocol. So photo sharing application or photo printing application, you don't log in them first directly by creating account there. You use Facebooks to log in them first. Post that uh, either you print or you can also use to share any article or post anything your Facebook account via that application itself. So this is also a OpenID Connect use case. OpenID doing the authentication, OAuth doing the authorization to post or to use your resources. Is it clear so far? And any doubt, Arpit and Karthik, because this is not your domain. Abhishek and we work on this domain, so it is quite we use it daily. But hope this is good enough to clear to give the answer. Because if you know what is OAuth, what is OpenID, is it a single sign-on or federation protocols, and how it works, if you have a fair idea, at least those questions you can give answers. So any doubt so far we move before we move ahead? No, Ravi. No. Okay, okay, thank you. The last is WS Federation is quite old legacy developed by some group of the companies. Microsoft is also one of them. So WS Federation, Microsoft ADFS, there's a federation services of the Active Directory. So each like let's say Active Directory was providing all the solution on the on-premise systems. But if they can want to a federation service, they have to build their own federation service. That's known as Active Directory Federation Service. Same way, Azure is their cloud name. Azure Active Directory is their Active Directory in the cloud. The Microsoft cloud known as Azure. So they all support WS Federation. So WS Federation, in this WS Federation, the uh, we have a realms. So like in identity provider, service provider, we have security domains. Previously, this identity provider and service provider or the relying party part of a security domain. But in WS Federation, this terminology is known as a realms, and the relying party is also known as a resource provider here. So there is an identity provider and the resource provider in WS Federation. They also support SAML and others protocols, but they also support WS Federation. It is SOAP based. So we'll read REST and SOAP in domain 3 in more detail, but it's SOAP based tool, which is legacy tool developed by group of companies. Microsoft was one of them. So far, so good. So we'll see one comparison that is very important. One questions comes based on this comparison. So SAML 2.0, that is an open standard for authentication and authorization both. OAuth 2 is only for authorization, OpenID for authentication. If we merge OAuth and OpenID, it gives both authentication and authorization. And it was developed by 2001 by OSIS. It was developed by Twitter and Google in 2006, and it is by the OpenID Foundation in 2014. Its primary use Ravi, case but was we read it like open OIDC is the authorization plus authentication, right? OpenID Connect, correct? So it was done as authentication only. It is merged with the OAuth 2 to give both authentication and authorization. But OpenID has to merge with the OAuth to give both authentication and authorization. OpenID was mainly a authentication protocol that is developed in 2014. Okay, there is no single term for OIDC plus OAuth. They are Now it is OpenID Connect with both the concept now. Now it is known as OpenID Connect. It has a OAuth 2 inbuilt. okay. So it should, I mean, in this slide, it But should it be perform authorization plus authentication. authentication. Yeah, but the protocol itself has authentication protocol. It is authentication protocol we call as, but it can perform both the operation now because it is merged with the OAuth2. So we'll see one or two questions where we will able to see both. But you are correct. We have to give the answer that both authentication and authorization can be performed now by OpenID Connect. Okay. The new term is OIDC. So when we merge OpenID Connect and OAuth, it is known as OIDC now. Okay. Okay, okay. OIDC. So we call as OIDC these days. Okay.
And we have seen this is primarily for enterprise application, web-based application SAML, and this is for authorization, API authorization, and this for the consumer applications. Mainly it is for the mobile and other applications. It is SAML based, it is JSON based, it is also JSON based. Okay. So last concept before it comes to questions answers, there's a type of federation. So we have seen there are two type of federation. One is cross certification and second is proxy. Cross certification, also known as web of trust. Cross certification is in which how the identity provider will trust the service provider. So how the trust happens? So either they certify each other, like they verify their ID, their address, their details, their GST number, their license. If they verify each other, it is known as a cross verification. So in a web of trust federated model, all the participant organization are identified. So in the web of trust, there is who can perform the identity provider, who can perform the service provider. So if they verify each other cross verification, each party can work as identity provider, each organization can work as service provider. So if I maintain my user account, you maintain your user account. But if you want to give the access to, if my user want access to your application, you trust my token. If your user want to access my application, I will trust your users, your tokens. So both all the organization can work as the identity provider, and each organization will assign identity credential to his own users, and other user will accept the credential or the token generated by the other identity provider. Getting my point? So each in the web of trust or the cross certificate, each we will certify each other and we will trust others token generated by other identity provider. In proxy, third party acts on behalf of the member organizations, and that work as a identity provider, and that provide so in the case Google or others that we have seen, this is third party who is managing the identity, and they are the one who is performing the identity provider. They are generating token, and all the parties in the trust, they are the relying parties. Let's say there are two companies, Google and let's say Infobins, Oracle and Infobins. If and there is a Google third company. So either I use Google, sorry, Oracle or the Infobins. Both companies. Let's say your user can access my services if you authenticate, or my user can access your application once I authenticate. This is cross certification. But let's say we trust Google. So even if Google say that you are authenticate, then I will ask access to my applications to your user. If your user gets authenticated by Google, then only I will ask access to your application. So who third party is uh, um, doing the authentication on behalf of us, and then only will granting the access of the resources. Is it clear? हाँ ठीक है. बट रवि आई मीन व्हाट इज द यूज, ये आपने यूज केस तो बताया अलग अलग टाइप की फेडरेशन, बट मतलब रियल एग्जांपल क्या है इसका फेडरेशन का, व्हाई इट इज ये टाइप ऑफ फेडरेशन का कि नॉर्मल फेडरेशन का? टाइप ऑफ फेडरेशन, मतलब फेडरेशन से क्या अच्छा मतलब है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ. तो रियल एग्जांपल, जैसे मैं सिंपल बताऊँ, मुझे एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ ना. मुझे तुमको ये है कि भाई मेरी गाड़ी यूज करनी है तुमको, है ना, या जब को जरूरत पड़े तुम्हारे पास बस है, मेरे पास गाड़ी है, तो मैं तुमको गाड़ी दे दूंगा. तुमको जरूरत पड़े और तुमको जरूरत पड़े मैं तुमसे बस ले लूंगा. तो ये हम आपस में एग्री करते हैं, तब तो ठीक है. तुम्हारे घर से कोई आएगा तो उसको मैं गाड़ी दे दूंगा, और तुम्हारे घर से कोई आएगा तो बस लेने, तो हम बस दे देंगे. पर मैं थर्ड पार्टी में ये हैगा कि मैं थर्ड पार्टी बोलेगा तो भी दूंगा. आई डोंट ट्रस्ट यू डायरेक्टली. सो यदि उस्मान भाई ने बोला है कि हाँ इसको दे दो, तो ही मैं तुमको गाड़ी दूंगा. तो समवन शुड टेक ए गारंटी कि हाँ वी ट्रस्ट, बोथ द पार्टी ट्रस्ट थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी वर्क एज ए प्रॉक्सी. until unless third party authenticate, I will not grant you access of the my resources. तो ये अपने अपने रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशंस के. जैसे मैं कंपनी हो जो सर्विस नाउ पोर्टल बनाती है, और तुम और कंपनी हो जो आउटलुक बनाती है. तो तुमको आउटलुक का एक्सेस चाहिए, मुझे सर्विस नाउ का एक्सेस चाहिए. पर कैसा मिलेगा? या तो है कि मैं खुद ही सर्विस नाउ अपने अंदर बिल्ड कर लूँ, हर एप्लीकेशन में खुद ही बना लूँ, वो तो होगा नहीं. तो मैं तुम्हारे रिसोर्सेज तभी यूज कर पाऊंगा या तो तुम मुझे अलाउ कर दो, तो या तो मैं अपना अकाउंट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ, या फिर मैं भी
अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी लॉगिन करके आया हूँ, तो यू ट्रस्ट एंड यू अलाउ एक्सेस बिकॉज यू ट्रस्ट मी। मेरे ऑर्गेनाइजेशन से ट्रस्टेड अकाउंट होगा तो तुम उसको अलाउ कर दोगे, ग्रांट कर दोगे एक्सेस। यू आर गेटिंग पॉइंट। तो आपस में ओके ट्रस्ट करते हैं तो हम आपको आपका ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तुमको थर्ड पार्टी से ट्रस्ट लेके आना पड़ेगा। कई ओके सारे एग्जांपल है, कई मल्टीनेशनल दो देश आपस में बात कर रहे हैं, यदि वो आपस में ट्रस्ट करते हैं तो आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तुम मुझे अपना पेट्रोल दो, मैं अपना गेहूं दूंगा। और यदि नहीं ट्रस्ट करते तो अमेरिका से ट्रस्ट लेके आओ, अदरवाइज आई विल नॉट गिव यू दोस रिसोर्सेज। तो ये ट्रस्ट है, हु विल मेंटेन द ट्रस्ट, यदि आपस में ट्रस्ट है या थर्ड पार्टी ट्रस्ट मेंटेन होगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो फेडरेशन में क्या है कि दो पार्टी की इन्वॉल्व है, यदि वो आपस में ट्रस्ट कर ले तो क्रॉस सर्टिफिकेशन हो गया, यदि थर्ड पार्टी कोई ट्रस्ट कराएगा तो प्रॉक्सी होगा। ठीक है। ओके। सो हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से, हम ऑलरेडी 10 पे, हमको जल्दी दूसरे कंसेप्ट पे देखना है। तो ये 12 क्वेश्चन है करीब। तो अर्पित से स्टार्ट करते हैं। अर्पित, यू स्टार्ट फर्स्ट। Is the most prevalent protocol used in identity federation. There are two SAML or Waze federation. It's more relevant protocol used in identity federation. Excuse me. It's a DWS federation. मोस्ट यूज इज सेमल है, डब्ल्यूएस फेडरेशन बहुत लिगेसी अब यूज नहीं होता, तो हमने चार WS देखे थे। सेमल, ओथ, ओआईडीसी और डब्ल्यूएस फेडरेशन। तो ये तो देखे नहीं हमने, तो छोड़ दो। तो सेमल सबसे मोस्ट यूज्ड फेडरेशन प्रोटोकॉल है अभी इंडस्ट्री में। बस उसकी लेक थी वो मोबाइल एप्लीकेशंस का, जिसलिए नए प्रोटोकॉल्स आए, अदरवाइज सेमल इज स्टिल द मोस्ट यूज्ड प्रोटोकॉल इन फेडरेशन है। ठीक है। दिस इज टू तो यू। आइडेंटिटी फेडरेशन क्यों लिखा हुआ है, मतलब आइडेंटिटी ये जैसे सैमल इज अ प्रोटोकॉल राइट? हाँ, वो हमने एक्चुअली कम तो आइडेंटिटी फीम है, फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, तो उसको आइडेंटिटी फेडरेशन बोलते हैं। एक्चुअल टर्म तो वही है, सेमल उसके लिए यूज होता है। तो हमने आइडेंटिटी फीम के लिए चार प्रोटोकॉल देखे थे, हाँ। सेमल, ओथ, ओआईडीसी और डब्ल्यूएस फेडरेशन। तो ये सब आइडेंटिटी फेडरेशन के ही प्रोटोकॉल है चारों। ओके, ये मतलब फेम ही बोल रहा है राइट हाँ, क्वेश्चन फीम में? ही है एक्चुअली ये। ओके। दिस इज टू अभिषेक। A group of clients decide to create an identification solution for the user. Medical providers and clinics, so they opt to review each other. Every governance standard they will find acceptable. What is the federation of? What is the federation model called? Okay. Group of clinical decide to create an. So they need to choose from some third party. So that will be a proxy, I guess. Cross certification was there. So if they want to opt to review each other for compliance and security governance, यदि हमने एक दूसरे का रिव्यू कर ही लिया है तब क्रॉस सर्टिफिकेशन है। यदि हम एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं होते, यदि ये मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बहुत जोग्राफिकली डिफरेंट होते या फिर अलग अलग कंट्रीज में होते और हम एक दूसरे को सिक्योरिटी कंप्लायंस रिव्यू नहीं करते, तो हम प्रॉक्सी पे जाते हैं। बट दे ऑप्ट टू रिव्यू ईच अदर। यदि ईच अदर एक दूसरे को रिव्यू कर लिया है, इट इज ऑलवेज ए क्रॉस सर्टिफिकेशन। और जो दो ऑप्शन है वो हमेशा कंफ्यूजन के लिए डिस्ट्रक्टर होंगे। आपने सिंगल साइन ऑन पढ़ा था, आप उस पर जाओगे, बट फेडरेशन सिंगल साइन ऑन कंसेप्ट नहीं है ना, तो वो रेगुलेटर तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि यदि हम ईच अदर को ट्रस्ट कर रहे हैं, ईच अदर को रिव्यू कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज ए क्रॉस सर्टिफिकेशन। ओके। ओह सॉरी, तीसरे क्वेश्चन दिख गया है। वो एक सेकेंड, एनिमेशन पे, चलो ठीक है, अब दिख गया है। तो तीसरा क्वेश्चंस का आंसर दिख गया है, तो हम थर्ड थर्ड का जल्दी से खत्म करते हैं। पढ़ लेते क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से चालू करते हैं वापस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इसका आंसर दिख गया, पर पढ़ लो। सो फेडरेशन अलाउज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस। दो ऑर्गेनाइजेशन में अक्रॉस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट फेडरेशन डूज, डू इट अलाउ द रोल रेप्लिकेशन, डू इट अलाउ द एन्क्रिप्शन,
Do it allow the policy or do it allow the access? Access. So only access, because हम access grant कर रहे हैं दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ना तो रॉ रेप्लिकेशन हो रहा है, ना इंक्रिप्शन हो रहा है, ना पॉलिसी रेप्लिकेशन हो रहा है, करेक्ट? It is only the access that is granted between two organizations. Okay, this is now to you, Karthik. Karthik, can you hear me? हाँ ये pretty good privacy है। Just the option. करेक्ट, पीजीपी तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी, है ना? दिस इज टू यू अर्पित. Okay. Which of the following is the federation standard protocol? It does not rely on simple object access protocol. So, for extensible does not rely. Open question. Which of the following federation standard? Federation standard D is not there. It's AWS federation. WS फेडरेशन सोप बेस्ड है Okay. और SAML XML बेस्ड है. ओपन आईडी कनेक्ट है जो जेसन बेस्ड है. तो हमने जो कंपैरिजन टेबल देखी थी ना, वहाँ पे हाँ लिखा था ओपन JWT आईडी. टोकन होता है. हाँ, तो JWT टोकन होता है, इसको जेसन टोकन बोलते हैं. OAuth एंड ओपन आईडी JWT जेसन बेस्ड टोकन है. इसीलिए ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये बचा. ठीक है, इसको रिवाइज करना, वो ज्यादा टफ नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो सब आंसर आ जाएंगे वापस. दिस इज टू यू अभिषेक, क्विकली. Which of the following protocol must applicable to the identification process aspect of identity and access? Which of the following protocol most efficient process that identity and access management? Okay. LDAP. करेक्ट. एलडेप हमने देखा था सेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में. एलडेप प्रोटोकॉल उसका नंबर क्या था? एक्स नंबर बताओ, क्या स्टैंडर्ड था? एक्स X500. X500. 500. So 500. LDAP, हाँ, so LDAP is used for the identification process में सबसे ज्यादा यूज होता है. बाकी प्रोटोकॉल हमने देखे नहीं. ठीक है, दिस इज टू यू कार्तिक. Discretion. हमने डिस्क्रिप्शन देखा नहीं. प्रोविजनिंग डी प्रोविजनिंग है, यूजर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट देखा था हमने. तो मैनेजमेंट प्रोविजनिंग डी प्रोविजनिंग पार्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट्स ऑफ IAM. ठीक है, दिस इज टू यू अभिषेक. Yeah, it is for Abhishek or for me. Oh, sorry, Arpit. Arpit, you are the next. Yeah. And when she belongs into the system, his password is compared to the hashed value stored in database. What is the process? It's what is the process? It's authentication. D. करेक्ट, क्योंकि पासवर्ड है जो समथिंग यू नो. पासवर्ड कंपेयर होता ऑथेंटिकेशन. यदि यूजर नेम कंपेयर होता, if the John logs in the system, his username is compared to the value in the database, तब वो आइडेंटिफिकेशन होता. ओके, हैशिंग और ऑथेंटिकेशन वो टोकनाइजेशन देखा ही नहीं हमने. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अभिषेक, दिस टू यू. The IT security subject matter expert hobbies related to that researcher and chief music. Create a federated identity and collective and third party certification of who will do the federation certificate that structure. Researchers and
यहाँ पे तो मुझे जो मतलब कंफ्यूजन ये है, यू आर द आई एम द पर्सन हु इज गिविंग द सर्विस, राइट? आगे बताओ। हाँ तो A third party certification model using participant collective using third party. The service provider, I am service provider. आंसर दो। पहले हम डिस्कस करेंगे बाद में। आंसर क्या सोचते हो? वेरियस नंबर नहीं होगा, क्लाउड प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तुम्हारा आंसर है। और तुम्हारा कार्तिक और तुम्हारा अर्पित? It's B प्रॉक्सी। proxy. ओके। और तुम्हारा कार्तिक? प्रॉक्सी है। तीनों का आंसर गलत है। रीजन क्या है कि ये प्रॉक्सी मॉडल है सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी आपका ऑथेंटिकेशन कर रहा है। पर हमेशा पूछना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा। उसने पूछा कि सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है। तो तुम लोग ही तो सर्विस प्रोवाइडर, द वेरियस मेंबर ऑफ द कलेक्टिव। इसमें क्या करा कि कुछ लोग जो कि ओल्ड म्यूजिक पसंद करते हैं, आर्काइव करते हैं, उनका एक ग्रुप बना है ना, आईटी एक्सपर्ट, आईटी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ऑफ हॉबियस कलेक्शन, देयर Okay, I रिसर्च am the एंड। IT expert of that हाँ group. हम Okay. हमको आईटी एक्सपर्ट बनाया गया है ऐसे लोगों का जो कि ओल्ड म्यूजिक को रिसर्च और आर्काइव करते हैं ना। तो मैंने सजेस्ट किया कि आप ये अलग अलग जगह पे होंगे लोग, तो हमने कहा फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट यूज करते हैं और थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेशन मॉडल यूज करते हैं जो कि प्रॉक्सी बेस्ड है ना। तो यदि पूछता है कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन है, तब तो वो आंसर आता मॉडल कौन सा है तो आता प्रॉक्सी। आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन है तो आता थर्ड पार्टी। तो यही क्वेश्चन तीन जैसे पूछा जाता है। तो हु वुड बी द आइडेंटिटी प्रोवाइडर, फेडरेटेड आइडेंटिटी प्रोवाइडर, तो आंसर आएगा थर्ड पार्टी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मॉडल दिस इज, दिस आएगा प्रॉक्सी। एंड हु आर द सर्विस प्रोवाइडर, तो हम वेरियस मेंबर्स है ना जो कि उसके वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसी मॉडल में तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पूछा गया है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जो जो पूछा जाता है उसको देखना पड़ेगा कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है। इसमें ये नहीं पूछा कि मॉडल कौन सा है, ये भी नहीं पूछा कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन सा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? और कभी भी क्लाउड प्रोवाइडर तो कुछ होगा ही नहीं है ना, वो तो सबसे डिस्ट्रक्टर था इन तीनों में से। पर तीनों आंसर होते बेस्ड ऑन द क्वेश्चन क्या पूछा जाता। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, क्लियर। No, है no. ना? है ना? सर्विस प्रोवाइडर पूछा, हमेशा ये ध्यान रखना कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर दो एंटिटीज है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो आइडेंटिटी देता है वो दो मॉडल हो सकते हैं, या तो क्रॉस सर्टिफिकेशन मॉडल पे हो सकता है, प्रॉक्सी मॉडल पे हो सकता है। पर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जो सर्विस देता है वो ऑथेंटिकेशन नहीं करता। तो वो जो सर्विस दे रहे हैं वो सब वो जो है जो मेंबर्स हैं उसके, जो यूज करेंगे उस सर्विस को। अब ये क्वेश्चन है अब अभिषेक से पूछा कार्तिक के लिए। ओपन बट अनअसाइन्ड अकाउंट्स आर vulnerabilities। करेक्ट। ये आंसर तो ये भी सही है, परंतु हमेशा वो हमें चूज करना पड़ेगा जो कि बेस्ट है। ये वर्नेबिलिटीज है, देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक्स, यूज दे मोरफन अकाउंट्स को यूज करने का, दे आर रिमेनिंग देयर। इसलिए आईएम सिस्टम में प्रोविजनिंग डी प्रोविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्पित के लिए। Yeah. You implement identity and access management IAM in order to control access between subject and the object. What is the ultimate purpose of these efforts? Identification, determine what is the specific individual authentication, serialization, it's a D. करेक्ट। आई ट्रिपल ई में जो अल्टीमेट पर्पस है अकाउंटेबिलिटी है, जिसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर रहे हैं। तो अल्टीमेट पर्पस है अकाउंटेबिलिटी। Right. अभिषेक की तो तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन है ये क्या? रवि, अकाउंटेबिलिटी ऑप्शनल नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, अकाउंटेबिलिटी ही तो अल्टीमेट पर्पस है। आईएम सिस्टम बनाया क्यों है हमने? ओके अब ओके, हाँ। हमने राइट। इसलिए बनाया है कि हमको पता चले कौन है, क्या परफॉर्म कर रहा है, और क्या उसको परमिशन थी उसने क्या। वो अकाउंटेबिलिटी के लिए हम आईएम सिस्टम बनाया, अदरवाइज कोई भी आके कुछ भी कर सकता था। सिस्टम में कोई भी लॉगिन कर सकता था, कोई भी सर्वर रूम में जा सकता था। कौन गया ये पता चले, अकाउंटेबिलिटी ही तो करना है हमको।
अल्टीमेट नहीं, पर्पस। अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन, मतलब कौन अब किसने किया हो रहा है, लेकिन ऑथराइजेशन जब तक अल्टीमेट पर्पस नहीं होगा तब तक नहीं, ऑथराइजेशन तो है कि मैं ऑथराइज है कि नहीं, पर मैं अनऑथराइज भी एक्सेस कर लिया मैंने, तो अल्टीमेट पर्पस की मैं अकाउंटेबल हो सकूं। कल से मुझे पूछा जाएगा कि व्हाई डिड आई एक्सेस दैट रिसोर्सेज, बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज टू डू दिस वन। सो दिस मॉड्यूल्स मेक श्योर कि वो कौन था, क्या उसने वो हमारी कंपनी का था, क्या उस कंपनी में जाने के लिए ऑथराइज था, ये सब अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि whether he has performed the operation as per his desired roles and responsibilities or not. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज ब्रेक भी नहीं लिया, हम तो खत्म करेंगे। ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, अभिषेक या आप तीनों अटेम्प्ट करो, ये इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के आंसर देना। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे लंबी लैंग्वेज में लिखे रहेंगे, अल्टीमेट लास्ट दो लाइन में ही है पूरा लॉजिक रहता है उसमें, पर वो पूरा एक बैकग्राउंड बनाते हैं ताकि आप थोड़ा डरो क्वेश्चन से फिर एंड में थोड़ा क्वेश्चन सिंपल ही होता है। बी आइडेंटिटी एज ए सर्विस। करेक्ट, बाकी का भी आंसर यही होना चाहिए। वैसे कौन सा मॉडल है ये, कौन सा फेडरेशन मॉडल है? ये प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी है, करेक्ट। हाँ, और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो है वो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, वो आइडेंटिटी एज ए सर्विस दे रहा है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एप्लीकेशंस होगी वो सब होगी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये है आज के लिए, ऑलमोस्ट वी आर 10:24 हो गया, ब्रेक नहीं लिया हमने। कल से हम थोड़ा रिमेनिंग कंसेप्ट करके क्विकली, एटलीस्ट मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 में चाह रहा हूँ कि इस वीक कंप्लीट कर लें, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे ज़्यादा रुकेंगे, बाकी पे हम जल्दी जल्दी क्रॉस करेंगे, ठीक है।